Hey, so let's look at Nifty 50 1 hour. Uh, this is a zone which has been, the candles have been moving around this zone from last 2 3 days. In all my position, in all my post market videos, I've mentioned that I'm not going to trade this zone, especially from a positional perspective. Uh, 1 hour candle did get closed below 1880, but I still want a closing below 17,990 on 1 hour. Considering Monday we have, we'll open with results coming on weekend, which are for Reliance and ICICI Bank. Uh, Probably that can set some tone, and I think the expiry next week is on Wednesday instead of Thursday. So let's see what happens. So in terms of positional, still waiting for a 1 hour close below this level, 17990 levels to look for a short. And Monday morning 1 hour candle should probably set that tone, I think. Let's see. Looking at intraday. So Nifty, I gave a trade based on this, where my trade was, if you look at a 15-minute chart, Kanashi. I shared a trade around 12:30, saying that if 12:45 is not touching VWAP or is above VWAP, I'll look for a buy above 12:45, scalp buys. But 12:45 was already above at VWAP, so this did not trigger. The reason for this trade was I was looking at this setup. This 12:45 was making a low, was breaking 12 low, which is what happened here also, right? But and it also gave a scalp buy, but I was not really interested because Viva was being touched, so more chances of coming down. What happened Bank Nifty? And somebody, I think I had shared this in TradingView chat, and somebody mentioned that why is this a 15-minute chart in a scalp trade? Now, I usually don't like to share scalp trades, but this is what I was looking at. So this looks like a scalp trade where about 12 body will mostly go to VWAP and then come back. Hence the scalp trade. So the entry is basically based on this candle high, which gives you an entry. You don't have to go to a lower time frame to look for the entry. The stop loss is this candle low, the 12:45 low, and your if this triggered, and your exit would be, of course, will be, if it's a scalp trade, would have to be at a lower time frame. So coming to Bank Nifty, this is probably the most interesting and the easy chart to trade today. I also gave a trade around these levels, 42 640 levels, on TradingView chat live, and also gave the targets. So we captured almost around 100 points here. So why did I make this trade? Two reasons. One was when you look at Bank Nifty, initially there was a volume up, so I was not looking for a big shot because until this is broken. And if you look at after say 10:30, 10:45, there were no follow-up volumes at all. There were literally no volumes at all in Bank Nifty. There was one volume spike here, which where the high was also broken and the low was also broken of that candle, which usually results in a sideways trade. Now, why did I go short, and when did I wanted to go short? I was looking for a consolidation around this high is low, which was this, and also around this point I did get a confirmation that this can reverse because this did not meet my condition, right? So looking at these two pointers, I went short. The stop loss was 70 points. Why was my target 530? Because this was the low which it created here, so I wanted this to break, and I was assuming that because it's a sideways to bullish kind of a day, it wouldn't really go beyond this, which is what happened. So I did book some of it here and some of it's around 560 levels, I think. Yeah. निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 1 घंटा पोजिशनली में, तो जैसे मैंने बोला था, लास्ट 2-3 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि इस रेंज में तो मैं कुछ करूँगा नहीं, तो इस रेंज के बाहर आज क्लोज हुआ है. लेकिन मंडे को, क्योंकि ICICI बैंक और रिलायंस का रिजल्ट आ रहा है वीकेंड पे, तो मंडे को ओपनिंग कैंडल बना कैंडल डिसाइड करना चाहिए मेरे ख्याल से क्या डायरेक्शन है, एटलीस्ट नेक्स्ट 3 दिन के लिए. उसके बाद बजट डे भी है,
नेक्स्ट 3 दिन का मतलब वेडनेसडे को हमारा एक्सपायरी है, शायद थर्सडे को छुट्टी है, तो नेक्स्ट 3 दिन का जो भी है वो मंडे डिसाइड करेगा, मंडे का क्लोजिंग मेरे ख्याल से, देखते हैं। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, मंडे की क्लोजिंग की वेट करूँगा। निफ्टी में आज मेरा ट्रेड ये था कि 1245 का जो कैंडल है वो मैंने बोला था कि अगर वीवैप टच नहीं कर रहा है या इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा तो मैं उसके ऊपर बाय करूँगा। ये मेरा रेफरेंस स्क्रीनशॉट है, ये मेरा रेफरेंस विजुअल है, इसके लिए मैंने बोला था। मेरा टारगेट यूजली वीवैप के आसपास था, लेकिन ये वीवैप टच कर रहा था तो इसलिए मैंने ये ट्रेड कैंसिल कर दिया था, ये ट्रिगर नहीं हुआ। और बैंक निफ्टी में किसी ने मेरे से पूछा था ट्रेडिंग व्यू चैट पे कि ये स्कैल्प बाय कैसे हो सकते हैं, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। स्कैल्प बाय देने का इरादा नहीं है मेरा, लेकिन क्योंकि इतना वो हो गया है, नैरो व्यू हो गया है मार्केट का, इसलिए स्पेशली यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पूरे रेंज में, इसीलिए मुझे लगा कि ये स्कैल्प मूव भी होगा। और ये अगर किसी ने लिया भी होता तो भी ये उसको 25 पॉइंट तो मिल ही जाते, लेकिन मैंने लिख भी दिया था वहाँ पर कि नहीं है, मैं नहीं लेने वाला करके। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में मैंने एक लाइव ट्रेड दिया था 42640 ट्रेडिंग व्यू चैट पे। मैंने बोला था यहाँ पे शॉर्ट करूँगा और टारगेट रहेगा 530 के नीचे के आसपास। तो ये क्यों दिया था मैंने, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुबह अप मूव आई है, तो ये बेसिकली जब मैं हैवी शॉट तो जाऊँगा नहीं जब तक ये लो नहीं टूटेगा और एक बाउंस नहीं देगा वीवैप के आसपास। तो लॉजिक क्या था शॉर्ट का, अगर आप देखेंगे उसके बाद कोई फॉलो वॉल्यूम आई नहीं, इस हाई के बाद सारी वॉल्यूम्स एम्प्टी है, और यहाँ पर एक वॉल्यूम आई है जो कि एक बाय वॉल्यूम जैसा है, ग्रीन वॉल्यूम है, एटलीस्ट बाय वॉल्यूम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका हाई भी टूटा है, उसका लो भी टूटा है। उस केस यूजुअली उस केसेस में साइडवेज रहता है मार्केट। अब वो कैसे टेस्ट करेंगे, आप एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए डे हाई। और मैंने यहाँ पर 1 बजे के बाद मैंने ये ट्रेड दिया था, क्यों, क्योंकि मेरा निफ्टी वाला ट्रेड मुझे पक्का पता था कि ये वापस आएगा जब ये वीवैप पे है, तो इसीलिए मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट गिरेगा वहाँ पर, और ये कंसोलिडेशन के आसपास मैंने ले लिया था इसको। और टारगेट मेरा प्रीवियस ब्रेक था, मैं चाहता नहीं, मैंने लिखा भी था शायद चैट पे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा ये टूटेगा, और यहाँ पे मैंने कुछ बुक किए थे और कुछ मैंने यहाँ पे बुक किए थे, ये भी मैंने लाइव दिया था चैट पे। थैंक यू।